Hello students. Today we are going to discuss in this lecture reactions of benzene. Now benzene undergoes electrophilic aromatic substitution. Now here what is happening, electrophile reacts with the aromatic ring and it substitutes one of the hydrogen. Now one thing to keep in mind, benzene does not undergo addition reaction because addition would give a product which is not aromatic. So basically we are going to discuss 5 types of main electrophilic substitution reactions, that is aromatic halogenation, aromatic nitration, Craft alkylation, acylation, and we will discuss aromatic sulfur. Let us तो जितने भी reactions लॉस ऑफ प्रोटॉन. ओके, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक X प्लस, तो ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड स्टेप में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, मींस ये आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा. दैट पॉजिटिव चार्ज इज शोन एंड इट विल बी रेजोनेटिंग लाइक दिस. वी विल सी हाउ इट इज हैपनिंग इन द मैकेनिज्म. एंड द थर्ड स्टेप इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन. तो अगर इसको हमने, तो योर प्रोडक्ट attached to benzene ring. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक हैलोजिनेशन. तो एरोमेटिक हैलोजिनेशन में हमारा जो रिएक्टेंट है वो, तो हैलोजन में आपके पास क्लोरीन या फिर ब्रोमीन है और कंडीशन है FeCl3 या फिर FeBr3 जैसे लुईस एसिड हमको चाहिए. Now analogous reaction with iodine and fluorine are not synthetically useful because iodine is too unreactive and fluorine is too violent. तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है यहाँ पर, Cl plus. अब एग्जाम्पल देखते हैं. बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड देयर इज नॉट ऑब्जर्व्ड, there is no reaction happening. So what we need, the condition जो मेंशन किया है, लुईस एसिड की जरूरत है यहाँ पर. तो ब्रोमीन और बेंजीन रिएक्ट होगा in presence of FeBr3 and you get a product like bromobenzene plus HBr. तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप जैसे कि कहा मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा. सो फॉर्मेशन ऑफ ClBr plus. सो हाउ वी हैव टू राइट Br plus FeBr3. तो आप यहाँ पर एक एरो दिखा सकते हैं. दैट मीन्स दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट दैट इज, and then you can show an arrow here. That means यहाँ पर हम इसको ब्रेक करके बता सकते हैं कि Br plus is formed with FeBr4 minus. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म. अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा सेकेंड स्टेप में. That means your electrophile will attack the pi electron system of the benzene ring और आपको मिलेगा. So this is your adenine ion with bromine and on the adjacent carbon you can show a positive charge. अभी ये resonance कैसे दिखाना है, just go on shifting this double bond. So I will shift this double bond to the adjacent carbon, तो आपका positive charge इस carbon पे move होगा. Okay, so here it is shown in this figure. तो ये आ गया आपका इधर और इधर double bond, positive charge is here. Again this double bond you can shift to the adjacent carbon so that positive charge moves to the next one. So this is a stabilization of adenine ion. Third step में there is a loss of proton to form the aromatic ring. Reform होगा. So you can just you have the structure. So I have written Br and Hgr, positive charge on this carbon. So you can just remove this proton. तो आपको product बन गया bromobenzene. That H will react with this Br. You get HBr and what is remaining is FeBr3. Okay, so benzene reacts with bromine and we get bromobenzene. Now what is the function of Lewis acid? Increase the polarity of the halogen molecule to produce positive halogen ions. That is a electrophile. So that is why in presence of Lewis acid only this reaction is possible, because जो Lewis acid है वो halogen का polarity increase करेगा and you get the positive halogen ions. Second reaction हम बात करेंगे So benzene and the concentrated HNO3 ये हमारा reactant है and the condition is constant of 4. तो example
reacts with HNO3 in presence of concentrated and you get nitrobenzene. You get benzene and this is N plus H2O. तो इसका मैकेनिज्म सिमिलरली हमारा पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारा इलेक्ट्रोफाइल है अभी नाइट्रोनियम NO2 प्लस. नाउ फर्स्ट स्टेप में होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा H2SO4 into HSO4 माइनस. सेकेंड स्टेप में आप है HNO3, ये वाला H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और आपका ये बन गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड. और थर्ड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है इनटू योर नाइट्रोनियम आयन. तो हमारा NO2 प्लस ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ पर फॉर्म होता है. नेक्स्ट स्टेप वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो बेंजीन और NO2 plus react होगा. So electrophile attacks the pi electron of the benzene system and you're getting the arenium ion. तो आप दिखा सकते हैं HNO2 here, positive charge on this carbon. तो ये हमने similarly जैसे पहले step में देखा है, the bond comes here, positive charge is moved here, this bond will shift and positive charge is coming on this carbon. तो अभी last step, third step में हमारा जो arenium ion है उसमें से proton loss होगा. So you can remove this H and your product is NO2 attached to this benzene. So your one nitrobenzene is formed. Along with this will give you H2SO4. So यहाँ तक I hope it is clear. Then we will talk the next type of reaction, that is Friedel-Crafts alkylation. ये भी बहुत important reaction है. Now here the reactant is your benzene and your alkyl halide. In presence of a Lewis acid like LCl3, you get alkyl benzene plus HCl. तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं. जस्ट एक पहला एग्जांपल देख लेते हैं. यू हैव बेंजीन प्लस CH3Cl, it will give you toluene and HCl. If you are taking benzene with CH3 CCl in presence of AlCl3, you will get tertiary butyl benzene. Let us see इसका मैकेनिज्म कैसे होता है. तो पहला स्टेप हमेशा की तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन CH3Cl plus your AlCl3. तो यहाँ पर पहले स्टेप में हम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट दिखाएंगे. ओके, यू कैन शो दिस एरो ऑन दिस AlCl3. तो ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया. जस्ट ब्रेक इट हियर, द ब्रेक मॉलिक्यूल हियर. सो वी विल गेट CH3 plus and remaining AlCl4 minus. तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया. व्हाट इज अवर कार्बोकेटायन? CH3 plus. सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक द pi electron system of the benzene and you get an arenium ion. Okay, so I will write here H, CH3, H and positive charges on this carbon. Again resonance से हम इसको shift करके ऐसे structure दिखा सकते हैं, that is stabilization of this arenium ion. And in the third step there is a loss of proton. Okay, यहाँ से हमने proton loss कर दिया तो ये हमारा product रह गया है CH3 attached to benzene, that is nothing but your toluene. LCl3 के साथ LCl3 और ये HCl, ये जो एक्स्ट्रा Cl है इसके साथ आके HCl बन जाएगा. तो हमको प्रोडक्ट मिला है toluene. So benzene reacts with methyl chloride and you get toluene. This is your Friedel-Crafts alkylation. Now similar reaction we are going to see in Friedel-Crafts acylation. यहाँ पर हमारा aromatic ring और एसिटाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड रिएक्ट होता है एंड वी गेट कीटोन एज अ प्रोडक्ट. तो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हमको रिक्वायर्ड है. सो बेंजीन रिएक्ट्स विद RCOCl और RCOO twice O, that means your anhydride. So acyl chloride or acidic anhydride in presence of AlCl3, which is acting as a catalyst, you have to reflux and you get a ketone RC double bond O benzene. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो सबसे पहले मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि ये असाइल कटायन कैसे फॉर्म होता है. सपोज आई हैव एसिटाइल क्लोराइड CH3 C double bond O Cl plus AlCl3. So this will give me CH3 C double bond O plus. Okay, this is my acylium ion. Again second step similar है previous reactions की तरह. बेंजीन और ये आपका असाइलियम आयन, रिजल्टिंग असाइलियम आयन ये
न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, सो और द रिलेटेड सब एडक्ट इज सब्जेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अरीन. सो यहाँ पर आपका अरीनियम आयन फॉर्म होता है. सो H here COCH3 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन. इसको हमने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से दिखा दिया है. सो इन द थर्ड स्टेप यू विल बी हैविंग थर्ड स्टेप में जो क्लोराइड आयन है वो डीप्रोटोनेट होगा. वो डीप्रोटोनेट करेगा रिंग को टू फॉर्म HCl. Okay, so you can show loss of proton from this and your product will be COCH3. AlCl3 plus HCl banega as a byproduct. Okay, so what is your product? We have taken benzene plus CH3COCl. तो हमारा प्रोडक्ट बन गया acetophenone, CH3CO benzene. Okay, this is our acetophenone. Now, what are the limitations of Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation? First thing, Friedel-Crafts acylation will not be carried out with a strong electron withdrawing group, for example, nitric acid. Second, Friedel-Crafts acylation will not react strong electron rich group like ammonia. Then polysubstitution reaction is not possible. Next point, chlorinated reactant is required for the reaction. And next point, catalyst, only AlCl3 is used to produce the acylated product. Then one more point, inability to separate the catalyst from the acidified product. And temperature is required to proceed the reaction. These are the limitations. Then we will see what is aromatic sulfonation. This is again simple reaction. Your benzene, you react with concentrated H2SO4, reflux for several hours, and then your hydrogen atom is replaced by sulfonic acid functional group. So what you are getting is benzene sulfonic acid. Benzene SO3H. Okay, this is your sulfonation reaction. So aromatic sulfonation, what is the mechanism? First step is the formation of electrophile, and that electrophile SO3H जो बन गया है, that reacts with benzene and we get adenine formation of carbocation. Third step, the deprotonation to form benzene sulfonic acid. The reduction of benzene is reduced to heat in presence of nickel. You get cyclohexane. And the next reaction is oxidation and ozonolysis. When benzene reacts with oxygen in presence of vanadium pentoxide, we get succinic anhydride. Benzene reacts with ozone and we get a addition product. Here, what we can show is you have to write O3 on every alternate carbon atom. So O3, and this will be broken like this, and you get glyoxal CHO. Okay, so in short, if you and then lastly, we can summarize all the reactions of benzene. So benzene first reacts with halogen like bromine, and we get bromobenzene. Bromine at room temperature reacts with, it is reduced, and we get cyclohexane. Bromine reacts with chlorine in presence of UV light, and you get hexachlorobenzene. Benzene reacts with chlorine in presence of AlCl3, we get chlorobenzene. Benzene reacts with concentrated H2SO4 and concentrated HNO3, and we get nitrobenzene. And lastly, benzene reacts with alkyl halide, we get toluene. Benzene reacts with acetyl chloride in presence of AlCl3, we get acetophenone, that is a ketone. Thank you.